Hi, this is Bhavachan Mukherjee and welcome to my YouTube channel. I love electrical engineering. Today, I will discuss on PIR and CSD of EHV circuit breaker. That is, what is the PIR, Pre-Insertion Resistor, or CSD, control switching device used in 400 kV or 765 kV breaker. Today, I will discuss on these two. So what are they? So we know maintaining the same distance between fixed contact and moving contact, SF gas in 6 kg pressure can quench the media, can operate up to 220 kV voltage system. So 400 kV and 765 kV system, we also use the SF gas as an arc quenching media in 6 kg pressure, and we operate the breaker by using multi-breaking theory. Mean in 400 kV system, 2 breaking of 220 kV by using grading capacitor. Similarly, for 760 kV system, we have used 4 breaking of 220 kV by using capacitor gradient. How? Suppose this is a 400 kV breaker. तो इसका जो दो टर्मिनल के है, दो टर्मिनल का अंदर वोल्टेज है 400 kV. But in SF gas in 6 kg pressure can operate up to 220 kV system also. So we have to break the 400 kV in two parts. I mean one part is 200 kV and another part is also 200 kV. So 200 kV का two part हमको यूज करना पड़ेगा. So this is one part, this is one part. This we have to divide it 200 kV इधर and 200 kV इधर. So इसके अंदर एक ब्रेकिंग होगा एंड इसके अंदर एक ब्रेकिंग होगा. So दो ब्रेकिंग करना पड़ेगा. 400 kV सिस्टम को दो ब्रेकिंग करना पड़ेगा. Each breaking is 200 kV. So 400 kV को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग इसी के साथ इसी का पैरेलल एक कैपेसिटर लगाता हूं. Similarly, for this part also we have used one capacitor. This capacitor is called capacitor gradient. So by using the capacitor gradient, we divided the 400 kV in two parts and each 220 kV. And there is two breaking part and दो interrupter chamber. एंड इसके अंदर 6 kg प्रेशर में रहता है, इसके अंदर भी 6 kg प्रेशर में गैप होता है. ऐसे हम लोग 400 kV ब्रेकर को ऑपरेट करता हूं. एंड जो कैपेसिटर रहता है इसका वैल्यू होता है लगभग अप्रोक्स 500 पिको फैराड ईच. एंड दोनों कैपेसिटर शुड बी इन द सेम वैल्यू टू मेंटेन द सेम वोल्टेज लेवल इन टू पार्ट. नाउ व्हेन दिस ब्रेकर विद कनेक्टेड विद लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, जब 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा EHV ट्रांसमिशन लाइन के साथ ब्रेकर कनेक्ट रहता है, वो ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है. इट्स एक्ट एज अ लार्ज कैपेसिटर बैंक. द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज एक्ट एज अ लार्ज कैपेसिटर बैंक. तो जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग स्विच ऑन करता हूं तो उसका इनिशियल चार्जिंग करंट बहुत हाई होता है. तो इनिशियल चार्जिंग करंट हाई होने की वजह से ब्रेकर डैमेज हो सकता है. ब्रेकर एंड ब्रेकर का एसोसिएटेड सिस्टम भी डैमेज हो सकता है. सो टू कंट्रोल दिस इनिशियल चार्जिंग करंट, we have used a small value of resistor in parallel with each breaker. Each breaker का ब्रेकिंग के साथ एक हम लोग रेजिस्टर का यूज कर देता हूं. इस ब्रेकर के साथ भी एक, इस ब्रेकर के साथ भी एक. तो हम लोग ईच ब्रेकिंग स्विच के साथ पैरेलली एक एक करके रेजिस्टर लगा देता हूं. तो ये जो रेजिस्टर को पैरेलली लगाता हूं ईच ब्रेकिंग स्विच के साथ, दिस रेजिस्टर इज कॉल्ड PIR, Pre-Insertion Resistor. Now how it will work? When we switch on the breaker, first the PIR circuit is on. Initially the PIR circuit is on. So initial charging current will flow in this way. And due to this resistor, it is control the initial charging current. Initial charging current को control कर देता है. Because we know current is equal to V by R. तो R जब बड़ा, R को जब इंक्रीज कर देता हूँ, करंट भी कम हो जाएगा. तो इनिशियल चार्जिंग करंट को ये रेजिस्टर कंट्रोल कर लेता है. तो इनिशियल PIR स्विच ऑन हो गया. PIR स्विच ऑन होने के बाद इनिशियली करंट इज फ्लो थ्रू दिस डायरेक्शन विद लिमिटिंग करंट, लिमिटिंग चार्जिंग करंट, एंड आफ्टर दिस 10 to 12 मिलीसेकंड, आफ्टर स्विच ऑन ऑफ PIR 10 to 15 मिलीसेकंड, द मेन ब्रेक स्विच इज ऑन, द मेन ब्रेकर स्विच इज ऑन. So after 10 to 12 millisecond, when main breaker switch is on, then current or voltage through in this direction. So current का जो प्रॉपर्टी है, जिस पाथ में रेजिस्टेंस कम होता है, जिस पाथ इजी होता है, उसी पाथ में करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा.
So इस पाथ में यार कोई करंट नहीं जाएगा, current will flow in direction. So it will connected in the system, but no current will flow through resistor as they are getting less resistor but zero resistor path, and so current will flow through the breaker switch. And during switch off condition, when we switch off, first PIR circuit will be switched off. First there is a break of PIR circuit. PIR circuit will break. After 10 to 12 milliseconds of breaking of PIR circuit, then main circuit is break. Then main circuit will be break. So during breaker on, first PIR circuit will be on. The PIR will control the initial charging current. After switch on the PIR, 10 to 12 milliseconds, the main breaking switch of the breaker will on. And after close the main switch of the breaker, after close the main contact of the breaker, the current will flow through main contact only, as the resistance of the main contact is very less. So no current will flow through PIR. But during open operation of the breaker, जब breaker को open करना पड़ेगा, then first PIR circuit will be break. After breaking of PIR circuit, 10 to 12 milliseconds, the main breaker switch or the main contact of the breaker will be off or will be cut. This is the function of PIR. So ये तो हो गया लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का चार्जिंग करने के लिए सिस्टम. बट अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, एक सबस्टेशन में बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लाइक 500 MVA ट्रांसफार्मर, बड़ा बड़ा रिएक्टर लाइक 50 MVA रिएक्टर, 125 MVA रिएक्टर, ये सब भी कनेक्ट होता है. एंड वी नो ट्रांसफार्मर रिएक्टर में रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होता है. ट्रांसमिशन लाइन में जैसे कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा होता है, ये ट्रांसफार्मर रिएक्टर में एक कॉइल रहता है. कॉइल मतलब इज इंडक्टेंस. द कॉइल इज मीनिंग ऑफ द कॉइल मीन इंडक्टेंस. जिसमें कॉइल रहता है उसमें इंडक्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसमें इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है. एंड ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है टू रिड्यूस द आई स्क्वायर आर लॉस, बट रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है. तो जिस सिस्टम में रिएक्टेंस कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा रहता है, उस सिस्टम का ट्रांजिएंट इफेक्ट व स्विचिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है. ट्रांजिएंट इफेक्ट व स्विचिंग इफेक्ट मतलब suppose this is a breaker and with this breaker one 500 MVA transformer is connected. So during normal operation the power is flowing to sinusoidal wave, but when due to any reason the transformer breaker is tripped, कोई भी कारण वजह तो ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो गया और ब्रेकर ट्रिप होगा, तुरंत क्या होगा, सिस्टम पीक ले लेगा, सिस्टम का वोल्टेज पीक लेगा इनिशियली, देन अगेन इट विल कम टू द साइनसोइडल वेव. तो ये जब कोई भी हेवी लोड सिस्टम से बर्न हो जाता है, तुरंत वोल्टेज का ट्रांजिएंट होता है. Similarly, in case of line, when we charge the line, due to the capacitance effect of the line, when initial charge, the initial charging current is very high, then it will come to the normal condition. So during switch off or switch on, the enormous increase of the voltage and current for a minimum time, it's called the transient effect. And this transient effect called very bad effect on the system, on the equipment and all these things. It's a very bad stress लेके आता है. ये सिस्टम का ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके आता है, वो सिस्टम का एजिंग कम कर देता है, सिस्टम को खराब कर देता है. सो इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इससे बचने के लिए हमको सिस्टम को उसी टाइम क्लोज करना पड़ेगा जिस टाइम में ट्रांजिएंट इफेक्ट कम होगा. तो हमारा सिस्टम का जो वोल्टेज एंड करंट का जो वेव है, इसको हमको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा. एंड मॉनिटर करते करते हमको स्विच ऑन व स्विच ऑफ ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तो ये जो सिस्टम को मॉनिटर करके किस टाइम में इसको ऑन होना है, किस टाइम में इसको ऑफ करना है, जिसकी वजह से ट्रांजिएंट इफेक्ट कम होगा, ये जो इक्विपमेंट इसको मॉनिटर करता है, दैट्स कॉल्ड CSD, कंट्रोल्ड स्विचिंग डिवाइस. तो ये कैसे काम करता है? सो इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है क्लोजिंग एट वोल्टेज पीक एंड ब्रेकिंग एट करंट जीरो. तो इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है क्लोजिंग एट वोल्टेज पीक, मतलब हमारा जो साइनसोइडल वेव में जब जा रहा है, when voltage in peak, उस टाइम में क्लोज होगा. So if you see the closing graph of voltage and current with a CSD breaker, you can see when R phase is closed when R phase voltage in peak condition. Similarly, Y phase is closed when Y phase voltage in peak condition. Similarly, B phase is closed when B phase voltage in peak condition. And तीनों कॉन्टैक्ट R, Y, B phase का कॉन्टैक्ट एक साथ में अपार्ट नहीं हुआ. There is a gap between R to Y, Y to B phase contact closing, and ये तीनों का क्लोजिंग का जो टाइमिंग होता है, ये मैक्सिमम इज 20 मिलीसेकेंड.
R, Y, B तीनों क्लोजिंग का विथ CSD ब्रेकर तीनों कॉन्टैक्ट का क्लोजिंग होता है. ये क्लोजिंग का टाइमिंग होता है इंक्लूडिंग ऑल थ्री कॉन्टैक्ट्स इज मैक्सिमम 20 मिलीसेकेंड. So breaker is closed when voltage is peak. The long waveform, the large waveform is voltage and the small waveform is current. So when breaker is on, then current will start to flow. So I am repeating again from this graph. The large waveform from long waveform is for voltage and current waveform will run when the contact is closed. So the small waveform is for current and the large waveform is for voltage. So you see, when R phase voltage in peak, the R phase contact is closed. Similarly, when Y phase voltage is in peak, Y phase is closed. And B phase voltage is on peak, B phase is closed. And this operation is taking maximum 20 milliseconds time. Similarly, for braking, I have said when current is zero, then breaker will break the circuit. When current is zero, then breaker will break the circuit. So if you see the graph of CSD breaker open operation, you see the voltage is the large waveform and the current is the low waveform, the current is the small waveform. You see when R phase current is zero, then R phase is closed. Similarly, when Y phase current is zero, Y phase is closed. Similarly, when B phase current is zero, B phase is closed. After giving command, the three phases are not operating at a time. There is some time delay. And these three phase causing and breaking one by one. And the maximum timing of the operation, including this three phase, is 20 milliseconds. And this synchronization is getting done by CSD, the control switching device.